Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now around 7 days are in between our SBI PO pre-examination and today. These 7 days are very crucial, and effective preparation in these 7 days can be game changer for you. So how to utilize these 7 days? First thing is you must have exam-like environment at home, and to create that environment, attempt at least 3 mock tests full length per day, one in the morning, one in the afternoon, and one in the evening. And also use topic test, sectional mock test, and speed drill during 7 days. Link of this mock test is available in description box. Click the link, register, take annual plan or SBI PO pre-plan along with topic test, along with sectional mock test, along with speed drill, and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these plans through Smart Kida app also. Download the app, select these plans and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now, what is the advantage of doing full length mock test and more full length mock tests? One advantage is you have a exam like feel at home. That means you become accustomed to the examination, and when you go to the real examination, so environment is same. Second advantage is you are able to identify where you are lacking, because once you will attempt the full length mock test, you will check your score, and after checking the score you will find that these type of topics I am still weak. The moment you make the list of these topics and focus on these topics, you will see that there is a gradual improvement in your performance. So to help you, the Smart Kida people have slashed the price of SBI PO pre mock test to a very low level, below 100 rupees. On application of coupon code AA03, you are getting these 30 mock tests at just 89 rupees 10 paisa. So I will advise you, if you are already having Smart Kida mock test, fine. If you are not having, you must attempt these 30 mock tests or most of these 30 mock tests during this period. So click the link, register, select the plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. These are very good mock tests. These are going to help you a lot, and on my advice you must use this. Just to check the level, there are two free full length mock tests available, one of 2024 and 2025. Simply register the link, utilize these two full length mock tests for free also. That will give you a sense why Smart Kida is important. Now, what is to be our full day schedule? Say you have done one full length mock test now, identify your weak topics, make a list of your weak topics, and spend some time on topic test, sectional mock test, and speed drill. Speed drill must be used for at least 2 hours a day. It will improve your speed and accuracy. Then attempt second full length mock test in afternoon. After attempting the second full length mock test, again spend time on topic test, sectional mock test, speed drill. And in evening or in night, you should attempt one full length mock test again, and after that spend time on topic test, sectional mock test, and speed drill. Many of you are asking, sir, give us the sequence of subjects that we must follow. Now the sequence will depend on order of weakness. If you are weak in English, give more time to English. If you are weak in quant, give more time to quant. If you are weak in reasoning, give more time to reasoning. So spend your entire day on full length mock test, topic test, sectional mock test, and also learn various formulas, tables, various conversions for quant paper. So all the best.
God bless you with success. If you have any query, you can place in the comment column. We will cover in the next video. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। लगभग 7 दिन बचे हैं। ये 7 दिन SBI PO एग्ज़ाम क्रैक करने में हमारे लिए वाटरशेड साबित हो सकते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक तैयारी करें, कंसिस्टेंट तैयारी करें और एक स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इन दिनों में डेली कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने चाहिए। एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में। बाकी सारा समय हमें टॉपिक टेस्ट, सेक्शन मॉक टेस्ट और स्पीड ड्रिल पे लगाना चाहिए। इस मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लें या SBI PO प्री का प्लान ले लें, साथ में टॉपिक टेस्ट ले लें, साथ में सेक्शन मॉक टेस्ट ले लें, साथ में स्पीड ड्रिल ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और एनुअल प्लान या SBI PO का प्री प्लान, साथ में टॉपिक टेस्ट, साथ में सेक्शन मॉक टेस्ट, साथ में स्पीड ड्रिल ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि जब आपने ये किया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, इसका क्या एडवांटेज है? देखो, जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के नज़दीक जाते हैं और अगर हम घर में ही एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट बना लेते हैं तो हमें एग्ज़ाम में जाकर दिक्कत नहीं आती है। इसलिए अधिक से अधिक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले करने में एक एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट घर पे ही बन जाता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इन मॉक टेस्ट के करने से, इनके नंबर देखने से हमें पता लगता है कि अभी भी हमारे कौन कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं। उन टॉपिक्स की आप लिस्ट बनाइए और फिर उन टॉपिक्स पे काम करिए। SBI PO प्री के लिए 15 मॉक टेस्ट 2024 के और 15 मॉक टेस्ट 2025 के उपलब्ध हैं। आप में से अधिकांश लोगों के पास ऑलरेडी स्मार्ट कीड़ा है, आप इसको अटेम्प्ट करते रहेंगे। जिन लोगों के पास स्मार्ट कीड़ा नहीं है, उनकी मदद करने के लिए स्मार्ट कीड़ा ने SBI PO प्री की जो प्लान है उसकी प्राइस स्लैश कर दी है और 100 रुपये से भी नीचे हो गई है। अगर आप इस प्लान को सेलेक्ट करते हैं और कूपन कोड AA03 लगाते हैं तो आपको 89 रुपीज़ 10 पैसा में ये 30 मॉक टेस्ट मिलते हैं। मेरी सलाह ये है कि अधिक से अधिक मॉक टेस्ट इस 30 में से आप अटेम्प्ट करके जाएं। और अगर आपको सैंपल देखना है तो इसमें 2 मॉक टेस्ट आपको फ्री भी उपलब्ध है। एक 2024 का, एक 2025 का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम है। उस लिंक से क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री 2 मॉक टेस्ट, एक 2024 का और एक 2025 का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मगर मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप 30 के 30 ये मॉक टेस्ट कर सकते हैं या 7 दिन में 20-21 मॉक टेस्ट भी इसमें से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपको एक एडिड एडवांटेज मिलेगी, जो भी आप मॉक टेस्ट अभी यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा। इसको आप ज़रूर करें। अब आपने करना क्या है? आपने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिया मॉर्निंग में, अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट बना ली। उसके बाद आप टाइम स्पेंड करिए टॉपिक टेस्ट पे, सेक्शनल मॉक टेस्ट पे और स्पीड ड्रिल पे। स्पीड ड्रिल 2 घंटे ज़रूर यूज़ करिए, इससे आपकी स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी बनेगी। इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अब टॉपिक टेस्ट करने से आपके टॉपिक इंप्रूव होते जाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपकी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट किया, जो बीच में टाइम मिला उसके अंदर टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, स्पीड ड्रिल की। फिर दोपहर में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, स्पीड ड्रिल करना है। फिर शाम को या इवनिंग रात को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट और स्पीड ड्रिल कर लिया। इस तरह से आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब आप में से कई लोग कह रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा बाद में करें। मेरे हिसाब से जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए, जो सब्जेक्ट वीकेस्ट है उसको हाईएस्ट टाइम दीजिए, जो उससे बेहतर है उससे कम, और जो सबसे बेहतर है सबसे कम टाइम उसको स्पेंड करिए। ये 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं, इसको बहुत गेनफुली आपने यूज़ करना है। स्ट्रेटजी मैं डेली दूंगा। जिन लोगों ने भी पास में स्ट्रेटजी को माना है उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।